My name is Aksa, and in this video we will discuss what are the figures and what are the tables, how to insert it, its benefits, advantages and so on. So, figures are visual presentation of results. ये किसकी फॉर्म में आती हैं? Graph, charts, drawings, photos and maps. And what are the tables? Tables are typically used to present raw data. For example, equations. As I told you कि लिस्ट ऑफ फिगर्स में फोटोज आती हैं एंड लिस्ट ऑफ टेबल में चार्ट टेबल एक्सेट्रा. सो ये लिस्ट ऑफ फिगर है एंड ये लिस्ट ऑफ टेबल है. इफ योर डॉक्यूमेंट हैज मोर देन 2 फिगर्स और टेबल्स, सो आपको लिस्ट ऑफ फिगर्स क्रिएट करना पड़ता है. एंड रीडर्स इसलिए लिस्ट ऑफ फिगर्स यूज करते हैं सो दे कैन क्विकली फाइंड द इलस्ट्रेशन, डायग्राम्स, चार्ट्स इन योर रिपोर्ट. फॉर लॉन्गर रिपोर्ट्स, जो कि बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं, तो हमें इसमें बेनिफिट ये है दैट कंटेन डजन ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स, सो इट्स कंपल्सरी टू क्रिएट list of figures and list of tables. So list of figures and list of tables are very important and having their caption, so it can be useful for browsing the document. First of all, आपको difference पता होना चाहिए कि list of figure and list of table में क्या difference है. So Hamad will tell you what are the difference between figures and tables. My name is Kumail Raza and today we are going to discuss in this video about advantages of using figures and table. Following are the advantages of using figures and table. Number 1, make a greater impact than just words. As you guys know that actions speak louder than words, so figure and table make a greater impact than words because words can't define better than a proper figure. Number 2, enable relationships to be seen easily. फॉर एग्ज़ाम्पल हम दो चीज़ों की रिलेशनशिप्स ईजिली बता सकते हैं बिना उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़े बगैर, क्योंकि दो चीज़ों का ग्राफ और फिगर हमें विजुअली दिखाई दे रहा होगा. नंबर 3, कंटेंस डिटेल इंफॉर्मेशन एंड थस अवॉइड द नेसेसिटी फॉर कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेटिव सेंटेंस. टेबल्स एंड फिगर एक हमें डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एंड कॉम्प्लेक्स और रिपीटेटिव जो हम अपनी एक्सप्लेनेशन में यूज़ करते हैं वो ग्राफ और फिगर में नहीं होती, बल्कि वो हमें एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. नंबर 1, एक्ट एज अ समरी ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन. फिगर्स एंड टेबल एक पूरी डिटेल समरी बता देती है ताकि हमें उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़नी ना पड़े. वो हमें टेबल्स और तरह तरह के फिगर्स से जाहिर कर देती है कि इस टॉपिक में क्या हो रहा है. नंबर 5, एक्ट एज अ वेलकम रिलीफ फ्रॉम पेजेस एंड पेजेस ऑफ टेक्स्ट. ये एक अच्छा एडवांटेज है हम यंगस्टर्स के लिए कि हमें बुक्स हाथ में लेकर पेजेस टू पेजेस घूमना ना पड़े, बल्कि टेबल्स और फिगर्स देखकर ही समझ आ जाता है कि उस चीज़ में क्या हो रहा है. नंबर 6, बाय यूजिंग द टेबल वी कैन ईजिली फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन एंड इट इज़ वन ऑफ द एफिशिएंट वे फॉर समराइज द गिविंग इंफॉर्मेशन इनटू द फॉर्म ऑफ कॉलम. बाय यूजिंग टेबल हम अपनी आसानी से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और एक अच्छा तरीका भी है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को और समराइज कर दें कॉलम फॉर्म में. थैंक यू. Today I am going to tell you the uses of list and figures. List and figures allows readers to quickly and easily navigate to those pages containing charts, images, graphs, or whatever they are interested in. They are used in books, documents, and उससे आपका टाइम बचता है. एंड अगर एक बुक में 5 फिगर्स से कम इमेजेस हैं, फिगर्स हैं, लिस्ट हैं, जो भी, so there is no use of listing the figures and references because they're easily, you can find them easily. So there's a checklist for list and figures that you should know. They should be appropriately formatted. एग्जैक्ट पेज नंबर सेम होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज सारा पर्पस ही इसका क्रिएट करने का यही है कि लोग इसे जल्दी से फाइंड कर सकें और ज़्यादा जल्दी से नेविगेट कर सकें. सो पेज नंबर शुड बी करेक्ट. टाइटल्स मैच होनी चाहिए बिकॉज otherwise there will be no purpose of creating the list of figures. My name is Saif Ali and in this video I will tell you how to create captions of figures.
इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फिगर पर जाना है एंड देन राइट क्लिक ऑन द पिक्चर, इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन में फिगर 1 है, इसे हम नाम दे देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन ओके। इसी तरह सेम प्रोसेस हम सेकंड फिगर पे भी करेंगे। ये सेकंड फिगर राइट क्लिक ऑन द फिगर एंड इंसर्ट कैप्शन, कैप्शन फिगर 2 एंड इसे भी हम नाम दे देते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड देन ओके। इस तरह हमारी फिगर 2 भी इसका नाम हो गया एंड फिगर 1 का भी हो गया। Now guys, my name is Mozzam and in this video I will talk you about how to insert table of figures and how to update a table. Now first you see there are figures available, figure 1, figure 2, figure 3 and so on. And go back to the bottom of the page, go to references, insert table of figures and click OK. Now you see list of figures available. Then how to update the table. Click here, name this figure as hardware computer. Now go back to the bottom of the page, select the whole table and click on update table. Update entire table, click OK. Now you see table of figures are updated. Now how to insert figure, and click on the figure, go to insert caption, click OK. My name is Wajia Tariq and in this video I am going to show you how to create a new table. But did you know why we use a table in our document? By using regular text in your document is fine in most cases, but for something that requires more information, you might want to try a table. This will let you enter your text in the form of rows and columns rather than in lines and paragraphs. That's why we use tables in our document. To create a new table, go to Insert, click on Tables and choose number of size you want in your document. As I choose 3 rows and 3 columns. You can add more number of rows and columns by click on plus sign and start entering your information as you want. For example, names, subjects and marks obtained by each student in their respective subjects. Here we have example of table number 1. Now we have uses of tables. Tables are useful for various tasks such as presenting text and numerical data like student records, item description list, etc. As you can see, we have here numerical data and names of the students in the form of text. Tables are used to organize data that is too detailed to be described in the text, allowing the reader to quickly see the results. By using table, we can easily find out the information, and it is one of the efficient way for summarize the given information in the form of columns. Word allows you to include multiple tables of contents in a single document. We can use a table to add the information in specific way rather than in paragraph. माय नेम इज़ फ़ायज़ा एहसान एंड टुडे सबसे पहले हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे
उसमें बहुत डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। उसमें एक ऑप्शन इंसर्ट कैप्शन का होगा, हम उस पर क्लिक करेंगे और फिर हम वहाँ टेबल सेलेक्ट करेंगे और उस टेबल को नाम देंगे, जैसे कि मैंने दिया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और हम ओके कर देंगे और फिर हमारे टेबल के ऊपर कैप्शन आ जाएगा। थैंक यू। Assalamualaikum, this is Mohammad Hamza Parvez and my registration ID is 13307. So today we are going to talk about how to generate automated list of tables on Microsoft Word. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारे डॉक्यूमेंट में जितनी भी टेबल्स हैं उन पे कैप्शन है मौजूद या नहीं है। तो सबसे पहले हम कैप्शन क्रिएट करेंगे और कैप्शन किस तरह क्रिएट करेंगे, टेबल पे गए, हम अपना कर्सर लेके राइट क्लिक किया, देन हमारे पास ऑप्शन आएगा एक इंसर्ट कैप्शन का। ये देख रहे हैं आप लोग, इंसर्ट कैप्शन का एक ऑप्शन आ गया हमारे पास। इंसर्ट कैप्शन पे जाके हमारे पास टेबल 1 लिखा हुआ आ गया। फॉर एग्जांपल टेबल 1 को मैंने नाम दे दिया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इस तरह हमारे पास टेबल 1 पे कैप्शन क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद टेबल 2 पे भी इसी तरह कैप्शन क्रिएट करेंगे। टेबल 2 पे जाके राइट क्लिक करके हमारे पास ये ऑप्शन आ गया इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन पे जाके टेबल 2 को हम लोगों ने फॉर एग्जांपल नाम दे दिया स्प्रेड शीट कॉन्सेप्ट्स। इस तरह हमारे पास टेबल 2 पे भी कैप्शन क्रिएट हो गया। इसी तरह कैप्शन टेबल 3 पे भी हम लोगों ने कैप्शन क्रिएट कर लिया। ये हमारी सारी टेबल पे कैप्शन क्रिएट हो गया। अब हम लिस्ट ऑफ टेबल किस तरह जनरेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लिस्ट ऑफ टेबल जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहले जहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ टेबल चाहिए वहाँ पे अपना कर्सर लेके जाएंगे और फिर हमारे पास जिस तरह ये बेसिक टूल्स होते हैं वर्ड पे, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज, यहाँ पे एक टूल होता है रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस पे जाके हम लोगों ने क्या किया, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे गए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कैप्शन लेबल के आगे लिखा हुआ है टेबल। अगर हमें लिस्ट ऑफ फिगर चाहिए होता तो हम टेबल को फिगर कर लेते, लेकिन हमें लिस्ट ऑफ टेबल चाहिए तो इस तरह हम टेबल ही रहने देंगे। तो ये मैंने ओके किया, या मेरे पास लिस्ट ऑफ टेबल जनरेट हो गई। तो इस तरह हम लिस्ट ऑफ टेबल जनरेट करते हैं। My name is Muhammad Hamad. In this video, I will explain you the differences between table of contents and table of figures. So first of all, we need to know about what is table of content and what is table of figures. Tables can be described as text or numbers in the form of columns. In simple words, we can say that a table usually shows numerical values. For example, any textual form or any equation that are arranged in column and rows are called table. They are basically used to represent the compiled data in a simple form. Table of figures. Figures are any illustration other than tables. They could be drawing, photos, etc. In table of figures, it includes a pie chart, map, photographs, drawings, and many other things. In order to create a table of figure, you must first label the figure in your document by inserting caption. For creating table of figures, this is very important. Now I will go to the differences between table of content and table of figures. As we have discussed, that tables are text or numbers in the form of columns, whereas figures are illustration of different kinds like a pie chart, a drawing, or photograph. This is the main difference between table of content and table of figures. Tables are not used to represent any pattern of relationship. It means that tables were not able to explain relationship between two things, whereas figures are used to show relationship pattern. Tables are denoted by Roman numerals, whereas figures are denoted by Arabic numerals. Tables are labeled at the top of the illustration, whereas figures are labeled below the illustration. So as we can see that there are many differences between table of contents and table of figures.
but both can enable writer to present a large amount of information efficiently and to make their data more comprehensible. Assalamu alaikum. This is Rashid Akhtar. I'm going to present my final presentation of ICT project. So a cross-reference allows you to link to other parts of the same documents. For example, you might use a cross-reference to link a chart or graphic that appears elsewhere in the documents. The cross-reference appears as a link that takes the reader to referenced items. If you want to link to separate documents, you can create a hyperlink. Create the items you are cross-referencing first. You can't cross-reference something that does not exist, so be sure that create that chart, reading, page number, etc. before you try to link to it. When you insert the cross-reference, you will see a dialog box that lists everything that available to link to. Here's an examples. Insert the cross-reference. In the documents, type the next that begins the cross-reference. For example, see figure number 2 for an explanation of the upward trend. Option number 2 on the insert tab, click cross-reference. Option number 3 is the reference type box. Click the drop down list to pick what you want to link to. The list of what's available depends on the type of items, headings, page numbers, etc. you are linking to. And the option number 4 in the insert reference, a box clicks the information you want to insert it. The document choices depends on what you choose in step number 3. In the step of 5th, in the for the which box, click the specific items you want to refer to, such as insert the cross-reference to allow user to jump to reference items. And the option number 7, 8 is simple, is that if the include above below check or box available, check to include, specify the relative position of the reference items, and then just simple click insert. So cross-reference are inserted as fields, and use a master documents. If you want to cross-reference item that reside the separate documents but don't want to use hyperlinks, you will have to first combine the documents into one master documents, then insert the cross references. A master document is a container for a set of separate files or sub documents. You can use a master documents to set up and manage a multiple part documents, such a book with several chapters. Now there is my final presentation is completed. Thanks from myself. If you understood and followed the tutorial showed in this video, the end results would be these: list of figures, table of contents, these both are pretty similar, list of tables would look like this. Hope you understood the topic discussed. Thank you.